2 साल पहले फार्म लॉज के अगेंस्ट अपने प्रोटेस्ट को विड्रॉ करने के बाद पंजाब के फार्मर्स फिर से सड़कों पर हैं। इस बार करीब 200 फार्मर्स यूनियन और उनके मेंबर्स दिल्ली में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, पर उन्हें बॉर्डर पर ही रोक दिया गया है। पिछले 3 दिन से ये फार्मर्स दिल्ली बॉर्डर पर टिके हुए हैं और इस बीच फार्मर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच क्लैशेस की न्यूज भी आई है। इन फार्मर्स का डिमांड है लीगल गारंटी ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस फॉर क्रॉप्स। तो क्या है मिनिमम सपोर्ट प्राइस और क्यों गवर्नमेंट इसकी लीगल गारंटी नहीं दे पा रही है? वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। इन फार्मर्स के करीब 12 डिमांड है। पहला डिमांड है लॉ टू गारंटी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसके अलावा फुल डेट वेवर फॉर फार्मर्स एंड लेबरर्स, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लैंड एक्विजिशन ऑफ 2013 जिसमें फार्मर्स की जमीन एक्वायर करने पर फार्मर्स का रिटन कंसेंट का प्रोविजन हो विद कॉम्पनसेशन एट 4 times द कलेक्टर रेट। इसके अलावा पनिशमेंट फॉर द परपिट्रेटर्स ऑफ द 2021 लखीमपुर खेरी किलिंग्स, India's withdrawal from the World Trade Organization and freezing of all free trade agreements और pension for farmers and farm laborers। बट इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस या एमएसपी जिसे कहते हैं, वो मिनिमम प्राइस है जिसे गवर्नमेंट फार्मर्स के लिए प्रॉफिटेबल मानती है और गवर्नमेंट एजेंसी उसी प्राइस पे फार्मर्स के क्रॉप को खरीदती है। गवर्नमेंट क्रॉप्स के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और डिमांड एंड सप्लाई को कंसीडर करके ही एमएसपी फिक्स करती है। फिलहाल एमएसपी 23 फार्म कमोडिटीज पे अप्लाइड है। तो सवाल है कि आखिर गवर्नमेंट फार्मर्स के डिमांड को क्यों नहीं मान रही और क्या लीगल गारंटी फॉर एमएसपी फीजिबल है? एक्सपर्ट से समझते हैं। Suppose we were to enact an MSP, law, which is basically a right to MSP. So then basically any farmer, he can actually go to a court of law, and he can say that, look, I sold my sesamum crop or my linseed crop or my wheat crop at this price. And he can demand it as a matter of right, So it becomes a right, and right means then obviously it becomes a whatever, it's something where you can go to the court, right? And then the whatever the district magistrate, the state government, they're obliged by law to give that this thing. So obviously the government is a little, any government, for that matter, would be wary of agreeing to this kind of a right, सरकार फार्मर से वो फसल एमएसपी पे खरीदती है जिसे गरीबों में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंडर डिस्ट्रीब्यूट करती है, जैसे चावल, दाल, वीट एटसेट्रा। बट गवर्नमेंट के प्रोक्योरमेंट की भी एक लिमिटेशन है एंड एमएसपी फिक्स करने पर प्राइवेट ट्रेडर्स को भी फार्मर से एमएसपी पे ही अनाज प्रोक्योर करना होगा और उस केस में अगर डिमांड कम है और मार्केट प्राइस भी लो तो हाई एमएसपी पे अनाज खरीदने से प्राइवेट ट्रेडर्स को काफी लॉस होगा। The trader buys again in order to sell, right? And so he will basically buy only if something if he can buy something at a price in which he can sell at a higher price, right? So if the price is below the MSP, or if he cannot sell at a higher price, then he will not buy. Right. So the danger of the second approach is, if you force trader to buy at one particular price, and which is much above the market price, the chances are that he will not buy at that price, जैसा हमने बताया कि फिलहाल एमएसपी सिर्फ 23 आइटम्स पे अप्लाई होता है एंड इफ एमएसपी बिकम्स अ लॉ, producers of other farm products like vegetables, fruits, poultry, milk products will also make similar demands. Fears that this will now, it'll kind of open a can of worms, or whatever, Pandora's box. Yeah. Because सभी लोग मांगने शुरू करेंगे, ठीक है? अभी now you have it, as you are saying, on those 23 crops. Yeah. Tomorrow, an anar farmer can demand it, an apple farmer can demand it, a pepper farmer can demand it, a rubber farmer can demand it, So then the whole thing expands. क्या बड़े डेवलप्ड कंट्रीज में भी एमएसपी का कानून है? So world over, the whole thing is they have, I think, moved away from MSPs as such. MSPs where I think they were basically introduced during the 50s, 60s. At that time they were the same. So now basically more and more countries are moving to what is called, instead of a minimum price support, they go by what is called a minimum income support.
लास्ट टाइम की तरह इस बार भी इस प्रोटेस्ट में पंजाब के फार्मर्स की ज्यादा हिस्सेदारी है। तो क्या एमएसपी ही पंजाब के फार्मर्स का सबसे बड़ा कंसर्न है? अगर एक्सपर्ट्स की माने तो एमएसपी रिजीम ही आज के डेट में पंजाब के एग्रेरियन डिस्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पैडी और वीट पे हाई एमएसपी गवर्नमेंट देती है और इसलिए पंजाब के फार्मर्स इसी ट्रैप में फंसकर सिर्फ पैडी और वीट ही उगाते हैं, जिससे पंजाब का ग्राउंड वाटर काफी कम हो रहा है और क्वालिटी ऑफ सॉइल भी खराब हो रही है। पंजाब का सबसे बड़ा इशू है डिजर्टिफिकेशन। कई साल से पंजाब की सरकार और एक्सपर्ट इस बात पर एम्फसाइज कर रहे हैं कि पंजाब के किसानों को वीट एंड पैडी के अलावा बाकी प्रोडक्ट्स भी कल्टीवेट करना चाहिए। बट हाई एमएसपी, ज्यादा सब्सिडीज के फायदे में वहां के किसान इस साइकिल को ब्रेक नहीं कर रहे हैं। पंजाब को करीब 60,000 करोड़ एमएसपी एनुअल मिलता है, जिसमें 35,000 करोड़ पैडी क्रॉप पे है और 25,000 करोड़ वीट पे। अगर आप कंपेयर करें तो एवरेज मंथली इनकम पर एग्रीकल्चर हाउस होल्ड इन पंजाब इज 2.5 टाइम हायर देन द इंडियन एवरेज। तो फिर भी पंजाब के किसान ही ज्यादा प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? पंजाब फार्मर इज मोर अवेयर एंड assertive. Okay, he's very aware of he's very rights conscious. Okay, it's something like, for example, say trade unions. Okay, the unionized workforce will be more assertive about demands, right? Whereas people who are unorganized, who are small, they have no ways of coming together. The Punjab farm unions are equivalent to whatever your CITU, Aajtak, HMS, BMS. They are like that. They are very organized. Punjab and Haryana farmer, even Western UP farmer, they are more militant. They are more organized. They are more aware. They read newspapers, etc. सवाल है कि अगर एमएसपी लॉ बनाना फाइनेंशियली फिजिबल नहीं है तो फिर फार्मर्स के रिस्क को रिड्यूस करने और उन्हें एम्पावर करने का रास्ता क्या है? I think in the long run, this right to MSP is going to come. You cannot run away from it. Okay, no government can run away from it, and it is bound to come. And probably what Punjab is thinking today, India, the rest of India may think tomorrow. So maybe we should move to some kind of a minimum income support for farmers. And that is necessary, I believe, also for a second reason. See, India is not New Zealand or Chile. Okay, we have many mouths to feed, right? And our requirements are only going to grow. Okay, so we need farmers to be in business, right? I mean, if farmers are out of business, if you and I, if we stop being journalists, the economy is not going to collapse. Okay, but if a farmer ceases to farm, our country is going to collapse, right? I mean, so therefore we need to ensure that farmers are in business, that they remain in business, and one way to do it is to assure them a minimum income. I think that is what maybe we should debate in the days ahead. Well, that's all for now. If you like this video, share it with your friends and family, and do not forget to subscribe to our channel India Today and Aajtak.